students, welcome to maths class, and today we'll do fractions. A fraction is denoted by the part or parts of the whole thing or the collection. Fraction means किसी एक पूरी चीज़ को अगर equally part में divide करते हैं, so each part is known as fraction. Raghu has a pizza. He want to give the pizza equally into 4 friends. So he divide it equally into 4 parts. So each will get 1/4 of the pizza. Clear? Let's revise. Shade the part of the given fraction. 2/3. 3 equal part है. We will shade any 2 part. That will represent 2/3. Clear? Next. Write each of the following fractions in word. 5/7. 5/7. EENTHS. Next, choose the proper fraction from the following fractions. So, proper fraction 9/16 is a proper fraction. Next, write the fraction whose numerator is 3 and denominator is 8. So, ये हो जाएगा 3/8. Next, choose the unit fractions from the following fractions. So, 1/17 is a unit fraction because numerator 1 है. Next, find the difference of the following fraction. 8/12 and 5/12. So, like fractions है तो 8 minus 5 that is 3/12. 1/4. Next, choose the fraction from the following fraction. Like fraction choose करना है हमें. So 4/16, 5/11, 6/11, 3/11, 7/22. So 5/11, 6/11 and 3/11. ये क्या हो जाएंगे? Like fraction. Next, find the sum of the following fractions. 8/23 plus 9/23 like fraction है तो numerator को add कर देंगे. That is 17/23. Next, arrange the following fraction in descending order, means decreasing order. So, decreasing order में start from the greatest. 9/13 like fraction है, then 8/13, 7/13 and 4/13. That is the descending order. Next, arrange the following in ascending order. Ascending means increasing order. So, smallest is 2/7, then 3/7, then 5/7 and the greatest is 9/7. Clear? Next, fractions. So we have learned about the fraction in previous class. Let us revise all important terms in the brief. The fraction written in 2 numerals. The numerator that is above the horizontal line or denominator that is below the horizontal line. 4/15, 4 is numerator and 15 is denominator. The numerator represents the part taken and the denominator represents the total number of equal part. Next, type of fraction. Like fraction, the fraction having the same denominator वो जाएंगे like fractions जिनका भी denominator same होगा, like 1/8, 4/8, 2/8, 6/8 like fraction. Unlike fraction, fraction having different denominator वो unlike fraction हो जाएंगे like 5/12, 3/8, 4/8, 17/24. ये क्या हो जाएंगे? Unlike fraction. Next, proper fraction. The fraction whose numerator is smaller than the denominator वो क्या ले लेंगे? Proper fraction. Like 6/13 है, 20/44 है, ये proper fraction हो जाएंगे. Improper fraction, the fraction whose denominator equal to or smaller than the numerator means denominator या तो numerator के equal हो या उससे छोटा हो, वो क्या हो जाएगा? Improper fraction. Like 8/8, 19/19, 5/4, 23/2. Improper fraction. Next is unit fraction. The fraction whose numerator is 1 are called unit fraction, like 1/9, 1/8, 1/19, 1/16. All these are unit fraction. Now we would extend fraction further. Mixed fraction. A combination of whole number and proper fraction वो कहलाएगा mixed fraction, like 3 7/8. तो 3 इसका हो जाएगा whole part and 7/8 fraction part. Clear? And improper fraction is converted into mixed fraction or vice versa. Improper को हम mix में convert कर सकते हैं, mix को improper में. The value of improper fraction is equal to or greater than 1. Improper fraction की value जो होगी या तो 1 के equal होगी या उससे greater होगी. The value of proper fraction is always less than 1. Next, conversion of improper fraction into mixed fraction. For that, we'll divide the numerator by denominator, write the quotient as whole number, जो भी part of the mixed fraction, write the remainder as the numerator of mixed fraction and write the divisor of the denominator of the mixed fraction. Example समझते हैं. Convert the following improper into mixed fraction. 37/6. So what we'll do? 37 को हम 6 से divide करेंगे तो हमारा जो quotient आया 6 that will become the whole part.
रिमाइंडर इज 1, 1 विल बिकम न्यूमरेटर एंड 6 जो हमारा डिवाइजर है वो हमारा बन जाएगा डिनोमिनेटर. सो 6 1/6. नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. Improper fraction, that is equals to whole number multiplied by the denominator plus numerator upon denominator. Example लेते हैं. Convert the following mixed fraction into proper fraction. 4 2/5. So 5 into 4. Denominator multiply with the whole part. 20 और उसमें add कर देंगे numerator. 22/5. That will be the answer. Next, equivalent fraction. So 1/2, 2/4, 3/6. 4/8. From above figure, it is clear that the shaded part of each figure is equal. So 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 क्या हो जाएंगे? Equal fractions. That indicate the same part of the circle. Or we say that these fractions represent the same amount. So these are called equivalent fraction. 1/2, 2/4, 3/6 and 4/8 are called equivalent fraction. To get an equivalent fraction, the given fraction will multiply or divide the numerator and denominator by the same non-zero number. Example लेते हैं. Write 4 equivalent fraction of the following fraction. 4/6 के हमें equivalent fraction लिखने हैं. So what we'll do? We will multiply it by numerator and denominator को पहले 2 से कर लेंगे, then 3, then 4, जितने भी हमें चाहिए we'll keep multiplying. Clear? So 8/12, 12/18, 16/24 and 20/30. All these are equivalent fraction. Clear? Next is to find out two fractions are equivalent or not. This will be more clear with the help of example. So we have to compare 5/11, 15/33 whether they are equivalent fraction or not. तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करेंगे. So 5 into 33 हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे एंड 11 और 15 के प्रोडक्ट को. 5 into 33 that is 165 and 15 into 11 that is also 165. मीन्स दोनों जो फ्रैक्शन है वो इक्वलेंट है. क्लियर? नोट, इफ बोथ क्रॉस प्रोडक्ट्स आर नॉट सेम द फ्रैक्शन आर नॉट इक्वलेंट फ्रैक्शन. अगर प्रोडक्ट सेम नहीं है तो वो इक्वलेंट फ्रैक्शन नहीं होंगे. नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन टाइम 7.1. Write the like fraction for each of the following. 7/8, so you can write 6/8, that is also our like fraction. Clear? Next, write T for true and F for false for the following. The denominator of the unit fraction is 1, that is false. Numerator 1 होता है. Next, write the 4 equivalent fraction of each of the following fraction. 4/8, so equivalent fraction हो जाएंगे. पहले 2 से कर लेंगे numerator and denominator को. 8/16, then 3 से करेंगे. इस तरीके से मल्टीप्लाई करते रहेंगे. फिर 4 से कर देंगे 16. So we'll get the equivalent fraction. Next, write an equivalent fraction of 5/7 with the numerator 45. So numerator 45 है, मीन्स 5 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, मीन्स 7 को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. 63. Next, convert the following mixed fraction into proper fraction. Mixed fraction को proper में चेंज करना है. 7 3s are 21 and 4 25/7. Next, convert the following improper fraction into mixed fraction. 43 6 42. So ये हो जाएगा 7 1/6. Clear? Next, write an equivalent fraction 96 1/92 with the numerator 32. अब हमें numerator 32 करना है. That means हमें डिवाइड करना पड़ेगा. So हम 3 से डिवाइड करेंगे. That means डिनोमिनेटर को भी 3 से करेंगे. So ये हो जाएगा 32 64. Clear? Next, check whether the given pair of fractions are equivalent or not. So what we'll do? 7 into 34 or 21 into 12. So that is equals to 238. Means the given fractions are not equivalent. Clear? Next, comparison of fraction. So we have learned to compare like fractions in earlier class. Let us revise the method of comparing like fractions. Look at the following.
this given figure that represents 5 by 8 part and this represents 6 by 8. The shaded part in given figure में अगर ये जो figure है इसमें देखें तो figure 2 में जो shaded part है वो ज़्यादा है. That means 6 by 8 is more than 5 by 8. Has the fractions having the greater numerator will be greater than the other in like fractions. और जिसका भी जो न्यूमरेटर है वो लेस होगा वो क्या होगा लेसर. एग्जाम्पल लेते हैं. कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन 13 by 28 and 20 by 28. लाइक फ्रैक्शन है सो विल कंपेयर द न्यूमरेटर. 20 is more than 13, so 20 upon 28 will be more than 13 upon 28. Clear? Next, comparison of unlike fraction. There are two methods to compare unlike fraction, cross multiplication and by converting them to like fractions. So first हम लेते हैं cross multiplication method. Let a upon b and c upon d two fractions है. First we'll find out the cross product. a और d का product और c और b का product. Clear? If a into d that is greater than b into c तो a upon b greater होगा c upon d से. If a and d का जो product है that is less than b into c then a upon b is less than c upon d. If a into d is equal to b into c then a upon b is equal to c upon d. Example लेते हैं. Compare the following pair of fraction 4 by 7 and 8 by 15. Cross multiply करेंगे 15 into 4 that is 60 and 8 into 7 that is 56. That means they are not equivalent because इनका जो product है different है. तो 4 by 7 will be greater than 8 by 15. Clear? Next, by converting them into like fractions. First, we'll take the LCM denominator of both the fraction, then we multiply each fraction by the suitable number to make their denominator equal to LCM. Now we'll compare the numerator. Example समझते हैं. Compare the following pair of fraction 13 by 20 and 11 by 15. So, unlike fraction है पहले like fraction में convert करने के लिए we'll take the LCM of denominator. 20 and 15 का हम LCM लेंगे. So 20 and 15 का LCM that is equals to 60. Now we'll convert both the fraction as the denominator 60. So हम क्या करेंगे. First fraction है हमारा 13 by 20. Denominator 20 है तो 60 को हम 20 से divide करेंगे we'll get 3. So numerator denominator दोनों को 3 से multiply करेंगे यार 39 upon 60. Next 11 by 15. So 60 को हम 15 से divide करेंगे 4 आएगा 4 से multiply करेंगे numerator and denominator को 44 upon 60. Now we'll compare the numerator. जिसका भी numerator greater होगा वो fraction greater होगा. Clear? That means 39 upon 36 is less than 44 upon 60 और हम कह सकते हैं 30 by 30 is less than 11 by 15. Clear? Next is lowest form or standard form of a fraction. When the highest common factor or HCF of the numerator and denominator of the fraction is 1, then the fraction is said to be in the lowest or standard form. Means numerator and denominator में 1 के अलावा और कुछ common नहीं होना चाहिए. To convert the fraction into lowest form, divide the numerator and denominator by their HCF. Example लेते हैं. Reduce each of the following fraction to lowest form 24 upon 50. So HCF अगर हम find out करेंगे 24 and 50 का that is 2. So 2 से divide करेंगे we'll get 12 upon 25. That is the lowest standard form of the given fraction. Clear? Next is evolution times 7.2. Fill in the blanks by putting greater than or less than 8 by 5 and 10 by 5. 8 by 5 will be less than 10 by 5 because numerator को compare करेंगे. Next, compare the following pair of fraction by converting them into like fraction. 11 upon 15 and 7 upon 10. So LCM लेंगे. LCM आ जाएगा 30. So 22 upon 30 and 21 upon 30. Clear? That means 11 by 15 will be greater than 7 by 10. Clear? Next, compare the following fraction by cross multiplication method. 5 by 8 and 2 by 3. So 5 3s are 15 and 8 2s are 16. That means 5 by 8 is less than 2 by 3. Clear? Next, arrange the following fraction in descending order. So for that what we'll do? First हम क्या करेंगे
डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देन विल कंपेयर द न्यूमरेटर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर. सेम प्रोसीजर रहेगा. लाइक यहाँ पे हमें ऑलरेडी जो है लाइक फ्रैक्शन में दे रखा है, सो विल कंपेयर द न्यूमरेटर. इट्स वेरी इजी. असेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर. स्मॉलेस्ट हो जाएगा 2/7, देन 3/7, 4/7 and 6/7. Clear? Next, reduce the following fraction to their lowest form. 40/72. HCF हो जाएगा 8, so 5/9. Clear? Next, addition of fraction. Sum of two or more like fraction, that is equals to sum of their numerator upon common denominator. Example लेते हैं. Add the following 3/12 plus 5/12. Like fractions है तो simply हम numerator को add कर देंगे 3 plus 5, that is 8/12. Clear? Next, addition of unlike fractions. To add the unlike fraction, first we'll convert them into like fraction and then simply जैसे हम add करते हैं वैसे ही करेंगे. Example लेते हैं. Add the following fraction 3/16 plus 5/8. पहले हम 16 और 8 का LCM लेंगे. 16 और 8 का जो LCM है that is 16. So ये हो जाएगा 3/16 and 10/16. So अब हम like fraction में ऐड कर देंगे 3 plus 10/16. ये हमारा आंसर आ जाएगा. That is 13/16. Clear? Next, evaluation time 7.3. Add the following like fraction. Like fraction है तो simply हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे 6 plus 4 10/17. Next, add the following fractions. So mixed fraction है तो हम whole number part को अलग से ऐड कर देंगे and fraction को अलग से. 5 and that is 3/9. 5 1/3. That will be the answer. Clear? Next, add the following unlike fractions. So सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, unlike fraction को like fraction में convert करना पड़ेगा. For that we have to take the LCM of 6, 9 and 12. So LCM आ जाएगा 36. 6 6 36 तो ये जाएगा 6 plus 4 4 16. बिकॉज हमने 36 को 9 से डिवाइड किया, 4 आया, उसको न्यूमरेटर के 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया. 36 डिवाइड बाय 12 दैट इज 3. 5 3 is 15. 37/36 एंड दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करेंगे 1/36. क्लियर? नेक्स्ट, एड द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन. सो अगेन मिक्स फ्रैक्शन में अभी जैसे हमने किया था, हम होल नंबर पार्ट को अलग से ऐड करेंगे एंड फ्रैक्शन पार्ट को अलग से. पहले डिनोमिनेटर सेम करके उसको हम करेंगे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट एंड ऐड करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन. Subtraction of like fraction. Difference of the like fraction that is equal to difference of their numerator upon common denominator. Example लेते हैं. Subtract the following fraction. 8/10 minus 4/10. So like fraction है, simply हम numerator को का difference find out करेंगे. 8 minus 4/10. Clear? So that is 4/10. Lowest में change करेंगे तो that is equals to 2/5. Next, subtraction of unlike fraction. To subtract the unlike fraction, first we'll convert them to like fraction and then जैसे simply subtract करते हैं उसी तरीके से करेंगे. Subtract the following fraction. 7/10 and 13 उसमें subtract करना है 13/25. So सबसे पहले हम 10 और 25 का LCM लेंगे, that is equals to 50. Clear? अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे 50 के. So now we'll make the denominator same. So ये हो जाएगा 35/50 and this is 26/50. Like fraction है तो सिंपली हम न्यूमरेटर का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. 35 minus 26/50 दैट इज 9/50. क्लियर? वन ऑल्टरनेटिव मैथड इज गिवन हियर. सो फर्स्ट विल टेक द एलसीएम. हमने 50 एलसीएम आ गया. फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10 है, 50 को 10 से डिवाइड किया, गेट 5. 5 को हमने क्या किया, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया. 35 माइनस 32 इंटू 10 2/50. सो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 9/50. वी कैन यूज एनी ऑफ द मैथड. क्लियर? प्रैक्टिस ऑल द एग्जाम्पल्स गिवन हियर. Next is evolution times 7.4. Subtract the following like fraction.
लाइक फ्रैक्शन है तो सिंपली हम न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 9 माइनस 3 दैट इज 6/12. लोएस्ट में चेंज करेंगे 1/2. नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शंस. अनलाइक फ्रैक्शन के लिए फर्स्ट विल टेक द एलसीएम 12 and 9 का, दैट इज 36, 28 minus 15, 13/36. Clear? Next, simplify the following. 8/14 plus 5/14 minus 2/14. So, like fraction है तो 8 plus 5 minus 2/14. 13 minus 2, that is 11/14. Clear? Next, simplify the following. So, सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी कैन चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इस तरीके से भी कर सकते हैं, और सिंपली हम होल पार्ट को अलग से कर दें एंड फ्रैक्शन वाले को अलग से. 7 plus 3/12. 7 minus 2 दैट इज 5. इसको सॉल्व करेंगे. 9, 7 और 12 का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. सो एलसीएम आ जाएगा, करेंगे इसको हम डिवाइड करेंगे. 28 minus 36 plus 21. इसको सॉल्व करेंगे हम. 28 plus 21 that is equals to 49 minus 36 upon 252. so इसको सॉल्व कर लेंगे. so that is equals to 513/252. clear? इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट है स्टोरी प्रॉब्लम्स. अ कंटेनर हैज 6 लीटर ऑफ मिल्क. 1/5 लीटर ऑफ मिल्क इज कंज्यूम्ड फ्रॉम इट. टोटल में से 6 लीटर में से 1/5 कंज्यूम हो गया है. हाउ मच लीटर ऑफ मिल्क इज लेफ्ट इन द कंटेनर. सो टोटल 6 लीटर था, उसमें से 1/5 कंज्यूम हो गया, तो 6 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 6 minus 11/5 हमने इम्प्रॉपर में चेंज किया, सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो विल गेट 19/5. इम्प्रॉपर है, इसको मिक्स में चेंज करेंगे. 3/4/5 लीटर मिल्क. क्लियर? प्रैक्टिस ऑल द एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट इज एवोल्यूशन टाइम 7.5. Ansh is 1/5 meter longer than her sister. If the height of her sister is 1/4 meter, find the height of Ansh. अंश जो है वो अपनी सिस्टर से 1/5 मीटर लॉन्ग है. सिस्टर की हाइट जो है 1/4 मीटर है. इसको हम पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे. सो दैट इज 6/4 और उसमें 1/5 ऐड कर देंगे. एलसीएम हो जाएगा 4 और 5 का 20. by 20. That is the height of Ansh. Clear? Practice all the questions. Next is look back. A fraction denote the part or the parts of the whole thing or a collection. A fraction has two numbers which are separated by the horizontal line. The number above the horizontal line, that is numerator, and below the horizontal line, that is known as denominator. A upon B, A numerator हो जाएगा, B denominator. The combination of whole number and the proper fraction, that is called mixed fraction. Two or more fractions that represent the same fraction value they are called equivalent fraction. To get an equivalent fraction to the given fraction, we multiply or divide the numerator and denominator of the given fraction by a non-zero number. The fraction having the greater numerator is greater than the other like fraction. If the HCF of the numerator and denominator of fraction is 1, it is said to be in the lowest form or standard form. To find the sum or difference of unlike fractions, we convert them into like fraction. Next is mental zone. 5/7 of 35. So 5/7 into 35 equals to 25. Next, multiple choice questions. Take the correct option. 4/5 is equivalent to 4/5 किसके equivalent होगा? None of these. So D is the correct option here. Here we end the chapter. I hope chapter आपको समझ में आ गया. Now to practice it.